Hello students, welcome to our YouTube channel again. So today we have another successful story for Germany. Yes, you heard right. Germany is the fourth largest country in the world for education system. So we have Ankit, he is from 𝔼𝕉 and he here to collect his visa for Germany. He is a master student. So we would like to congratulate him first of all, and we would like to know how he has contacted first time and how the journey was begun. So congratulations Ankit. So Ankit, I would like to know how you know about us and how you contacted Indo-European team. Okay. I go through from your company with online process and there's a social media channel and it is very good experience with you guys and it is very interesting and my process is probably online because I am an officer here head office in Delhi and also an officer but your main head office in Delhi. So it is very great experience for me and most of the teachers, like most of the counselor like Krishna helped me so much. So there is a way and I got my visa today. Okay. So finally you got your visa for master studies and I appreciate the people who want good successful studies because many questions are coming. Yes, of course, Germany is a hub of good industries related to IT and management. So yes, of course, he has chosen a good university. So now he has completed his dream for Germany. And what was the story behind that? The Ankit will explain us very briefly. So Ankit, which university are you going? I am going to International University of Applied Science. Okay. And it is in Berlin. Okay. There are two campuses. I had one of them in Berlin, but I have to choose Berlin. Berlin campus. Okay. Yes, because it is 26th ranking all over Europe. Yeah. So I think it is very good for me, and the placement system is very good. When I meet up with representatives of the university, and their experience is so good, and they also helped me so many ways. So that's why I chose this university. Sure. So when you contacted first time in our branch, 𝔼𝕉 Center, I believe. So what was the counseling experience you got from there? And because whenever we come in, we have a lot of questions कि कैसे जाना चाहिए और कौन से कैंपस हमारे लिए बेस्ट हैं और मेन पार्ट ये होता है अंकित कि रेलेवेंट कितना है कोर्स, उसके अपकमिंग आउटपुट कैसे आने वाले हैं आफ्टर एजुकेशन. सो वो जो कोर्स ऑफ सिलेक्शन था या कंट्री की सिलेक्शन आप करके आए थे वो कैसा था एक्सपीरियंस, बिकॉज वो काफी मैटर करता है आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा ऑस्ट्रेलिया बहुत जगह देखा, ओवरऑल एक्सपीरियंस किया, बट वो चीज नहीं दिखी जो क्योंकि यूनिवर्सिटीज फीस इज सो लेस देन एज कंपेयर्ड. So like Australia, there is a fees like 11 lakh for 6 months, and my university is approximately 5 to 6 lakh for 1 year, and also scholarship. And it is very good, and I think it is very budgetable for me. Yeah. So that's the reason I choose this country. In an affordable way, you got a very good university, yes. And Germany exposure is actually good in the job industry also. Yes. Yeah, that's good. So when you start your process, because you staying in 𝔼𝕉 and of course the team is sitting in Delhi head office, so the communication level through online only? Yes, through online. Okay. Okay. So how you'll be getting the trainings for the interview part? Yeah, like Zoom meetings every Monday to Friday classes. Okay. Zoom meeting, and there is a 𝔼𝕉. Okay. And she's very good in training manner, and I think it is very good choice. So your coordination was good with her. Yes. Okay, that's good. Because students को थोड़ा सा डर होता है इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया जाएगा and what they will ask. In fact, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे एम्बेसी हो, बट आपकी ट्रेनिंग पार्ट अच्छी रही, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका आता है ट्रेनिंग्स करने के बाद. That's good. So अंकित, एक्सपीरियंसेस जब स्टूडेंट्स के होते हैं मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट वही होता है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन भी अप्लाई करना चाहती है तो कहीं ना कहीं वो उनका माइंडसेट होता है कि कौन सी कंसल्टेंसी क्या हेल्प कर रही है, और स्टूडेंट्स का रिव्यू काफ़ी बड़ी चीज़ है. सो व्हाट यू विल सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि उनको अगर अप्लाई करना है तो कैसे ऑन टाइम क्या चीज़ें अरेंज करनी चाहिए एंड व्हाई दे विल चूज अस? फर्स्ट ऑफ ऑल भेड़ चाल में तो पसंद है क्योंकि आजकल ये भीड़ बहुत है और कहते हैं लग जाएगा. अगर मेरे को इंटरव्यू ओपिनियन कहना तो साफ मना कर देना. उन्होंने मेरे को ये भी कह दिया था
या आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा तभी आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल में तो हम नहीं करा सकते। बिल्कुल ठीक है, तो वो क्राइटेरिया होता है एक बंदे का, जैसे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वैसे उस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो गो थ्रू हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे भी यही लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अगर डे 1 पे आपको चीजें क्लियर कर दी जाएं वो ज्यादा बेस्ट रहती है, बिकॉज एक होप होती है लास्ट में अगर वो खराब हो तो टूटता है, तो उससे अच्छा पहले बता दीजिए। क्योंकि आपका टाइम, आपकी मनी और यू नो इम्प्रेशन हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कंसल्टेंट अगर गाइड करें प्रॉपर वे में कि जो पॉसिबल है वो इफेक्टिवली हो जाता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूँ उनकी कि टीम अगर इफेक्टिवली काम करिए बट स्टूडेंट भी कितना पेशेंस से उनको चीज़ों को एक्टिवली निभा रहे हैं, साथ में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन टाइम, तो भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं और प्रोसेस ऑन टाइम हो जाता है। चलो, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। विच इनटेक आर यू गोइंग? July. Okay, so when your course will be starting? My classes will be starting 10th of July. Okay, and this time you are moving to Germany for your study dream country. So I really hope when you reach there, if you need any sort of help, then you need to consider us. You can call us. My team will be definitely helping you. And lastly, I mean, you can just please suggest to my students why they can choose Indo-European. The first and foremost reason is that कि आपको बहुत कुछ मतलब कि क्लैरिटी मिल जाएगी, सबसे मेन बात, क्योंकि आजकल एजेंट्स पे विश्वास करना लाइक बहुत ही कहते हैं ना भगवान से भी ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, वो चीज है। सही बात कही आपने। थैंक यू सो मच। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका टाइम लगा होता है, आपकी मनी इन्वेस्टेड होती है और फैमिली को भी कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे का वीजा ऑन टाइम आ जाए, और जो मेहनत स्टूडेंट ने की होती है, ऑफ कोर्स आपकी स्टडी बैकग्राउंड इतने शार्प हैं, इतने अच्छे हैं, तभी आप जर्मनी जैसी कंट्री जा रहे हो। आइल्स भी किया था आपने? ठीक है। सो आइल्स होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपने ऑब्जर्व किया कि कनाडा, यूएस, यूके में भी आप एलिजिबल थे, बट फिर भी आपका फोकस जर्मनी की तरफ आया कि जो मनी आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे आपको उतना फ्रूटफुल नहीं लगी। चलो, दैट्स गुड। स्टूडेंट्स, अंकित के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ऐसा नहीं है कि आप आइल्स कर रहे हैं आप इंग्लिश कंट्रीज जा सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल, बट हाँ, जो अंकित ने ऑब्जर्व किया कि शेंगन कंट्रीज में जो उनको बेनिफिट दिखे विद अ गुड बजट, कि मैं 5 to 6 लाख के बजट में जर्मनी जैसी कंट्री में मास्टर्स कर सकता हूँ एज अ सेमेस्टर फीस देके, तो ये सारे बेनिफिट्स आप भी ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप भी अपने प्रोफाइल के बारे में हमारी तरफ कॉल करके, हमारी ब्रांचेस में विजिट करके अपना प्रोफाइल असेसमेंट करा सकते हैं। Thank you so much. See you again. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.